Spermatogenesis. What is spermatogenesis? Spermatogenesis means the immature germ cells, male germ cells, they produces sperm by the process which is known as spermatogenesis. And when does this process starts? It begins at puberty. Okay. Now the spermatogonium, where are they present? जो spermatogoniums होते हैं वो कहाँ होते हैं? They are present on the inside wall of seminiferous tubules. Now they will divide by mitotic division, and this is equational division. Alright, so the chromosome number will remain same, but the number will increase, the amount will increase. So spermatogonium का amount तो बढ़ेगा, but जो chromosome का number है that will remain same. No, just spermatogoniums are, they are diploid hands 2n, that means the amount of chromosome number is 46 chromosomes. Okay, as you can see over here, this is the basement membrane of seminiferous tubule. Okay, and there are various stem cells which will divide through mitotic division and produce two types of cells. What are these two types of cells? Type A and type B cells, right? So this spermatogonium stem cell, they will divide by mitotic division and form two types of cells, type A and type B. Now what are type A? Type A क्या करेंगे? They will replenish the stem cells, whereas type B will differentiate into primary spermatocytes, right? Now the steps of spermatogenesis. How does this spermatogenesis starts? So it starts with various spermatogoniums, and eventually type B cells will form primary spermatocytes, right? And these primary spermatocytes are what? 2n in number. That means they are diploid. They are diploid. Now, periodically they will undergo meiosis 1. So they will undergo meiosis 1, and this is what? A reductional division. So reductional division, that means the chromosome number will reduce by half. So 2n will become n. They will form what? Two equal haploid cells, and these two haploid cells are known as secondary spermatocytes, and they will have how many chromosomes? 23 chromosomes each, whereas this primary spermatocyte has 46 chromosomes. The secondary spermatocytes, from primary spermatocytes through meiosis 1, we are having two haploid cells, secondary spermatocyte haploid cells. Now these secondary spermatocytes, they will undergo meiosis second. Now this meiosis second is what? It's equational division, again like mitosis. Okay, so it will split into two equal haploids. So this cell will split into two equal haploids, and this secondary spermatocyte also will split into two. So how many haploid spermatocytes you will have? You will have 4. 2 from this and 2 from this. So therefore 1, 2, 3 and 4. So at the end you will have how many? 4 equal haploid spermatids. Now these spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. Now after spermiogenesis, the sperms which are formed will get embedded into Spermatogenesis cells, and they will released in seminiferous tubules via a process known as spermiation. Okay, as you can see over here, this is what? This is the basement membrane. Basement membrane of what? Seminiferous tubules, right? And then you have your spermatogonia. These spermatogonia will form two types of cells, type A and type B. Type A will replenish the stem cells, whereas type B will form what? Sperms. They will form primary spermatocyte, and at the end will form sperms. Now, they will divide via mitosis, and they will form what? Primary spermatocyte. And these primary spermatocytes are what? 2n in number, right? They have 46 chromosomes, and they will divide via meiosis 1, and this is what? Reductional division. So therefore there will be two equal haploid secondary spermatocytes. Now these two equal haploid spermatocytes will undergo what? Meiosis second, and they will form what? 4 spermatids, and their chromosome number will be, and they will have 23 chromosomes each, whereas primary spermatocytes have how many? 46, whereas secondary have 2 each, will have what? How many? 23 each. Now these 23 chromosomes are what? They are haploid. And a quick review,
spermatogonium, they will form what? Type A cell and type B cell. Type A are what? Replenish the stem cells, whereas type B will further divide and make what? Sperms. Through how they will make? Firstly, they will form primary spermatocytes, right? They are 2n in number, and through meiosis 1 they will split into 2 equal haploids, and these 2 equal haploids will undergo meiosis 2, and they will form how many? 4 equal haploid spermatids. Now they will mature, and at the end will form what? Sperms, and get embedded in Sertoli cells. Now oogenesis. What is oogenesis? The process of formation of mature female gamete is known as oogenesis, and it starts from very first embryonic developmental stage, right? जैसे ही जो फीमेल फीटस होती है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या? oogenesis. There are couple of million of various mother gametes which are known as oogonias, and they are formed within each ovary, and there will be no more oogonia formed and added after birth. So जितने बनने हैं आपके फीटल लाइफ में बन जाते हैं, उसके बाद कोई ओगोनियाज आपके नहीं बनते हैं. देन वो क्या करते हैं? धीरे धीरे दे विल फॉर्म व्हाट? सेकेंडरी oocyte. सो इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी ओवर है, ये एक ओवरी का डायग्राम है और इसमें प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे एक ओवम बनता है, कैसे एक सेकेंडरी oocyte बनता है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर योर primary follicles, secondary follicle, tertiary follicle, and mature Graafican follicles, right? And eventually they will release what? Secondary oocytes. And this remnant will become what? Corpus luteum, and at the end will form what? Corpus albicans. This is corpus luteum. This is yellow in color, whereas this is whitish in color. And this is what? This is secondary oocyte, not ovum. राइट? क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपसे, जब भी आपका ओवुलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है? इज इट प्राइमरी oocyte, इज इट सेकेंडरी oocyte, इज इट ओवम, और इज इट ग्राफियन फॉलिकल? ऑप्शंस में कुछ भी दे देंगे. सो आंसर विल बी सेकेंडरी oocyte. सो oogenesis starts from in fetal development. So what will happen? Your oogonia will start the division, right? And they will enter the prophase 1 of the mitotic division, right? So oogonia, they will divide via mitosis, which is equational division, so there will be no change in chromosome numbers, and they will form what? Primary oocyte. Okay, now these primary oocyte will undergo what? Meiosis 1. अब meiosis के जो 4 steps होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज, राइट? ये जो 4 आपके steps होते हैं, इन 4 steps के अंदर जो आपका प्रोफेज 1 है meiosis का, जो वेरी फर्स्ट फेज होता है, वहाँ पे आपके प्राइमरी oocyte क्या होते हैं? टेम्परेरी अरेस्ट हो जाते हैं. Now what will happen? आपके जो प्राइमरी oocyte है वो meiosis प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है till puberty. Now जो ये each प्राइमरी oocyte है आपका, ठीक है, ये सराउंड हो जाएगा किन से? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से, राइट? एंड दोज सेल्स आर नोन एज फॉलिकल्स. सो फर्स्टली दे विल फॉर्म व्हाट? प्राइमरी फॉलिकल्स. Okay, and these follicle will keep on degenerating during the phase from birth till puberty. Now at puberty, how many? 60,000 to 80,000 primary follicles will be there in your each ovum. Now at puberty, what will happen? Your primary follicles, which have been formed with the help of what? GnRH, gonadotropin, FSH and LH, and few primordial grows and they form what? Primary follicles. Now they will contain what? Primary oocyte. These follicle will contain what? Primary oocyte, and covered with the granulosa cells, and they grows to form what? Zona pellucida. They will form zona pellucida between the primary oocyte and the granulosa cells. तो ये जो primary oocyte है, इसके बाहर बहुत सारे granulosa cells हो जाएंगे आपके, ठीक है? And they will form what? A zona pellucida layer. Okay, they will form a zona pellucida layer. Now the stroma cell on the basement membrane organize and form theca follicle. तो जो stromal cells हैं, they will form what? A theca follicles, right? Theca follicle. So यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पहले हमारे पास क्या था? Oogonium, right? In fetal ovaries, and they will undergo what? Mitosis and form what? Primary oocyte. And these primary oocyte will undergo meiosis, and they will become arrested in the phase 1, prophase 1, and they will remain arrested till when? Till your puberty. Now when the puberty will be achieved, these primary oocyte which are in prophase 1, this cycle will reassume and meiosis 1 will be completed. Next is secondary and tertiary follicle. So the secondary follicles, they will soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid filled cavity known as antrum. Okay, and the theca layer is organized into inner theca interna and outer theca externa. In this stage, primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. So होगा क्या यहाँ पे कि जो primary oocyte है, it will undergo tertiary follicles. It will make tertiary follicles, right? यहाँ पे आपका एक tertiary follicle भी बनेगा,
राइट, जिसको हम मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स बोलते हैं, और जो क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा. इट विल keeps on growing in size and completes its first meiotic division, right? And when this first meiotic division is completed, as it is unequal, so unequal means reductional, so chromosome number will be reduced, which will result in the formation of large haploid secondary oocyte and release the first polar body. Secondary oocyte release karega and it will release the first polar body. This will be your first polar body, right? What will happen next? Your secondary oocyte which has been released is arrested in metaphase second. That means जो आपकी meiosis second हो रही है, meiosis second हो रही है, उसके metaphase second में arrest हो जाएगा ये, right? अब ये जो cycle है meiosis second जिसमें ये arrest हुआ है, ये resume कब होगी, ये complete कब होगी? It will be completed only when your sperm will fertilize this ovum. ठीक है, on fertilization this meiosis second will be completed. और जब ये sperm एंटर करता है ओवम के अंदर, तब सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है. आपकी कितनी पोलर बॉडी रिलीज हुई? एक जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तब हुई, ठीक है, एक पोलर बॉडी. एक जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, वो सेकंड पोलर बॉडी. थर्ड पोलर बॉडी कब बनती है? जो ये आपकी पोलर बॉडी यहाँ पे बनी है ना, ये भी तो अंडरगो करेगी क्या? meiosis second. When it will undergo meiosis second, so it will split into two equals. So एक के दो बन गए, ठीक है, तो दो पोलर बॉडी यहाँ से होगी और एक पोलर बॉडी आपकी सेकेंडरी oocyte से बनेगी. सो टोटल इस पूरी साइकिल में कितनी पोलर बॉडी बनती है? 3. हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो देयर आर 2 अरेस्ट जो आपको पता होने चाहिए. तो फर्स्ट अरेस्ट तो आपका कब आता है? जब आपका प्राइमरी oocyte बनता है, राइट, जब आपका प्राइमरी oocyte बनता है. एंड इट विल रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 till when? till your puberty. जब तक आपकी प्यूबर्टी नहीं आती. जब आपकी प्यूबर्टी आ जाएगी तब आपका प्राइमरी oocyte बनेगा which will undergo meiosis 1 and there will be reduction in chromosome, so 2n का n हो जाएगा and secondary oocyte will be formed. Now this secondary oocyte will be fertilized with your sperm and when it will be fertilized, so there will be release of another polar body. अब जब तक ये fertilize नहीं होता this secondary oocyte, it will remain in what? In metaphase second arrest. ठीक है, तो जो meiosis second का metaphase है उसमें ये अरेस्ट रहेगा. तो 2 अरेस्ट हो गए, एक प्राइमरी oocyte का प्रोफेज 1 में, एक मेटाफेज सेकंड में सेकेंडरी oocyte का. ठीक है, तो प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है आपका एंड सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है आपका. नाउ जब इसके अराउंड ये फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज योर प्राइमोडियल फॉलिकल. ओके, एंड दिस प्राइमोडियल फॉलिकल विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, right, and secondary follicle, tertiary follicle, and at the end it will form what? mature graphene follicles. ठीक है, और ये on LH surge it will release what? your secondary oocyte which is known as your ovulation, and the remnant will become what? corpus luteum, and this corpus luteum will secrete 2 hormones. Name them please in the comment section कि वो 2 हार्मोन कौन से होते हैं. और जब ओव्यूलेशन होता है तो कौन से 2 हार्मोन राइज करता है? एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ. सेकंड हार्मोन कौन सा होता है जो राइज करता है? पूरी साइकिल का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो फर्स्टली oogenesis में क्या होगा? पहले प्राइमरी oocyte बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. दोनों 2n नंबर है, दैट मींस कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है. यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो स्पर्म्स तो आपके डेली बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है? वंस इन अ मंथ आपका ओवम बनता है और आपकी 2 ओवरीज होती हैं. तो अल्टरनेट में आपकी ओवरीज वर्क करती है, एक बार लेफ्ट करेगी एंड एक बार आपकी राइट ओवरी वर्क करेगी. ठीक है, सो वंस इन अ मंथ आपका क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है. सो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आपका जब फर्टिलाइज होगा, राइट, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ 1 पोलर बॉडी. और जब आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तब भी एक पोलर बॉडी रिलीज होती है विच इज फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है? ये अरेस्ट रहता है किसमें? मेटाफेज सेकंड में. तो जो meiosis है उसके मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है, राइट. तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है. ठीक है, एंड इट हैव फॉर्म्ड स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड 1. यहाँ पे आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. ये आपको याद रखने की बहुत जरूरत है कि प्राइमरी oocyte भी कैसा होता है? डिप्लॉइड. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड. सेकेंडरी oocyte कैसा है? हैप्लॉइड. whereas secondary spermatocyte is also haploid. ओके, अब एक ही बार होती है रिडक्शनल डिवीजन दोनों में. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मियोसिस है होल लाइफ कौन से सेल आपके शो करते हैं? सो योर जर्म सेल्स इन मेल एंड इन फीमेल्स दे विल शो मियोसिस. बाकी किसी सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है. XYZ जितने भी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर
वो सब ग्रो करते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू माइटोसिस. दे विल ग्रो इन नंबर, राइट, बट द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. सिर्फ जर्म सेल्स ही ऐसे होता है जिनका क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, रिड्यूस होता है. ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू मियोसिस. अब यहाँ से आपका मैच्योर स्पर्म आ रहा है और यहाँ से आपका सेकेंडरी oocyte आ रहा है. So there will be fertilization. ये आके क्या करेगा, penetrate करेगा ovum को, zona pellucida. So there will be release of what? There will be release of second polar body. Okay. Now the first polar body have also divided into two new polar bodies. अब ये जो polar bodies है ना, इनका काम क्या होता है, ये जब ये आपका zygote बनता है, when it will form zygote, and यहाँ पे this your sperm is also N and your secondary oocyte is also N. So N and N will form 2N, right? So N will form 2N. Zygote is what? It is a single cell stage but have 46 chromosome, but it is diploid, not haploid. Okay. Now what will happen? What will happen to these polar bodies? They will go into perivitelline space and nurture this zygote. So this is all about this whole topic, spermatogenesis and oogenesis. I hope it's been clear to you guys कि spermatogenesis और oogenesis क्या होता है और एक fertilization कैसे होती है. ठीक है. And अगर एग्जाम्स की तैयारी होगी आसान, तो बूस्टर के साथ स्टडी बढ़े, स्टडी बढ़े. नर्सिंग बूस्टर सिलेक्शन तो बनता है.